Hello everyone, my name is Swami and you're watching Sweet Indian Reaction. And today I'm gonna react to the magical journey of Hercules. So without any delay, let's jump into it. देख रहे हो लाइव रिकॉर्डिंग चल रही है लाइव रिकॉर्डिंग चल रही है सर 2005. बहुत ज़्यादा। ये मतलब ये तो एक और इमेज भी है जिसमें आपको नजर आएगा कुछ 25-30 लोगों ने बस टेबल रिकॉर्ड उठाया था जस्ट टू डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड। ये इनका तरीका। ये बात पहुंचना लोगों तक जरूरी है कि यार ये भी पाकिस्तान है ना, तो देख लो। ये इनके जज्बात है जो इनके ये जज्बात पहुंचे हैं। हुए Yes. रिकॉर्ड करने। This is so amazing. उसकी वीडियो भी बन रही है, उसके अंदर भी ये विजुअल इन्फॉर्मेशन एंड वी आर क्रिएटिंग दीज मोमेंट्स। पठान जो है, पश्तून जो है, वो बहुत आर्ट और म्यूजिक के Pathan, Pashtun. I thought about it. I thought it was that because when I saw the video in the beginning, I said that I was getting a Pathani vibe kind of. I didn't really understand the song totally because it was Pashto and I think it was Western English as well. So yeah, let's see what more they have to reveal in this magical journey. शैदाई लोग, और ये चीज़ें हमने अपने एरिया लकी मरवत में देखी है। उस ज़माने में JVC या नेशनल या पैनासोनिक के टेप रिकॉर्ड जो ब्लैक स्पीकर्स लगे होते थे सिल्वर कलर के, वो लोग जो है ना अपने दुम्बे बकरे बेच के लेते थे। We found out that a lot of things that were ingrained in our heads were completely false. The kind of pictures that they were bringing up from different cultures, it was insane. It opened our vision so much. So गाने का नैरेटिव है, it's about one word welcoming the other, right? But this is us talking to the world. कि बेशक हम फ़र्क हैं आपसे, तो अच्छी बात है फ़र्क है, लेकिन हमारे दिल के दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं। ज़हूर is a Pashto artist from मर्दान। So जो नैरेटिव है वो एक्चुअली बिल्कुल फिट इन भी कर रहा है, टाई इन भी कर रहा है with the realities of the situation. Wow, it's so beautiful. Damn, it's so beautiful. मेरा कल्चर क्यों लैग बैक कर रहा है और कल्चर के हिसाब से? ग्लोबल जितने भी कल्चर्स हैं वो किस तरह से मतलब ऑपरेट करते हैं, दुनिया उसको किस तरह से चेरिश करती है, हम क्यों बेचारे हैं भाई? Yeah, what? हमें साबित नहीं करना, हमें उस चीज़ को ओन करके इस तरह से सेलिब्रेट करना है कि लोग भी उसे देखें कि यार ये कल्चर तो हम कुछ और समझ रहे थे, तो कुछ और है। हमारी जो हिस्ट्री है बीइंग अ पख्तून, इट्स सो रिच। हमारे कल्चर में कितना सरकाज़म है, हमारे कल्चर में कितनी सेलिब्रेशंस हैं, हमारे कल्चर में कितना फ़न है, और साथ में हमारे कल्चर में कितना रिस्पेक्ट है। मुझे पता नहीं था कि भाई ओरिजिनल्स कैसे बनाते हैं। कवर्स करता था मैं यूनिवर्सिटीज़ में, हमारे सीनियर्स बहुत ज़्यादा रैगिंग करते थे। सीनियर्स से बचने के लिए मैं उन्हें कहता था मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मुझे गाने आते हैं। लफ्जूना रिलीज नहीं हुआ था उस टाइम पे, मुझे बिल्कुल अंदाजा ही नहीं था कि एक बंदे को एक गाना भी पसंद आता है, और मेरा गाना। और वहाँ से फिर 1 महीना गुजर गया, 2 महीना, उसकी एक हाइप बिल्ड होनी स्टार्ट हुई, और फिर रेंडमली मुझे जुल्फी भाई का मैसेज आया। जो मैंने अपने दिमाग में एक पश्तो मेलोडीज़ और आइडियाज़ और बीट्स और ग्रूव्स का एक कॉन्सेप्ट था, पता चला कि नहीं, देयर इज़ अ वे टू डू इट इन विच इट कैन जस्ट बी समथिंग एल्स बट स्टिल रियल। मुझे वो बंदा, वो एलिमेंट नज़र आ गया कि जिसके थ्रू हम ये कर सकते हैं। Zuhur gave me that excitement, so I realized then now we can build a world, now we can build a narrative, so I just messaged him. मेरे करियर का सबसे बड़ा हिस्सा पेशावर है, सबसे ज़्यादा मेलोडीज पेशावर से ही निकली है, पेशावर के ढाबों से निकली है, पेशावर के कावे की दुकानों से निकली है। पेशावर जमूंगा कोर दे, तो हम कोर जमूँ पेशावर दे। इट्स लाइक पेशावर इज़ आवर सेकेंड होम। हर एक पठान उसे एक घर समझता है। यहाँ पे पेशावर में तो सब कुछ स्पेशल है।
पेशावर के खाने स्पेशल है, लोग स्पेशल है, पेशावर का अपना एक एसेंस है। मैं और उस्मान जब आते हैं ना तो ज़्यादातर यहाँ पे मोहल्लों में ही घूमते हैं। यहाँ के लोगों के जो डायलेक्ट्स होते हैं, यहाँ पे जो खाने मिलते हैं, वो खुद में एक इंस्पिरेशन होती है, जैसे मेलोडीज बनती है। बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारी चीज़ें, इवन बिजनेसेस बहुत बड़े बड़े हैं हम यहाँ पे प्लान करते हैं। ये सराउंडिंग के मेरे गली मोहल्लों के लोग हैं जिनके साथ मैं सलाम करता हूँ, मेरे साथ बच्चे गुजरते हैं, ढाबों पे बैठता हूँ, वहाँ पे जो लोग बातें करते हैं, उन्हीं से मेरा म्यूज़िक निकलता है। 1, 2, 3. Yeah, I wanted to know about her. You're toxic, I'm slipping under with a taste of your poison. मेरा नाम रहमा है. I'm from Los Angeles. I've been making music since I was 14. You know that you're toxic, yeah. मेरी उर्दू अच्छी Oh, she नहीं है. speaks Urdu. टूटी फूटी है. I knew सब she कुछ had some समझती हूँ connection मगर with इतनी अच्छी Pakistan. नहीं बोलती हूँ. This is our first time meeting. There's a lot of miles gone into this meeting as well. Man, a lot of air miles. Like. By the end of the song ना रहमा is singing in Pashto as well. तो उसको पश्तो थोड़ी ट्रेनिंग देनी है, तो ज़हूर और हिदायत भी है देने के लिए. I'm about to sing in Pashto before I sing in Urdu, but it's fine. I'll do it though. I'm better. I can't read it. Nashamadizo. Nashamadiza. When I first heard the song, I thought there are ways that I could really complement this song in a way that most people probably can't, because it's in English and it's a different perspective. It's a different world that I grew up in, but it's still the same feeling. हम ऐसी बात करें कि दो लोग हैं जो कि एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं बोलते, but they want to express their love for each other. So उनकी क्या कहानी होगी? It gives me a little bit of vibe from the season 14's Felt Mahram. like it was meant to be when he talked to me people about the concept. I Together really against each resonated. other. And that was a love song as well. So, and this is a love song as well. You know, we'd started with the intention This of like, guy. you know, how exciting would it be if we made The- like a track in English and Pashto, Main engineer. right? But once her verse was in, I was like, I'm not even thinking about that anymore. He's so versatile. Abdullah Siddiqui, he's so versatile. इंटेंट है God वो bless him. कॉन्वर्सेशन विद द वर्ल्ड. मैं ठीक है आपसे डिफरेंट हूँ, लेकिन इसका हरगिज़ ही मतलब नहीं है कि मैं आपके लिए क्लोज्ड हूँ. जुहन ज़मा जुहन दस्ता बेल शांति थी. हमारी ज़िंदगी और उनकी ज़िंदगी भले ही डिफरेंट हो, हर कली ज़क्कम हम ज़ड़प दरवाजे, हम दिल के दरवाजे खोल के आपको वेलकम करते हैं कि आप आए, हमारे साथ एक चाय तो पिएं, फिर आपको मज़ा आएगा कि हम कैसे लोग हैं. So he says welcome, and I'm like, are you sure? Are you sure I can come in? Are you okay with that? Okay. I Now I find the understand a lot similarity about the lyrics. in both the languages. पश्तो का तंदर और वो बेसिकली इंग्लिश में थंडर है. कुछ वर्ड्स थे जो सिमिलर थे, मैंने कहा ये क्या हो रहा है. With all of that knowledge in mind, I came in and I sat with him and I made that bridge. We need hand claps, we need stomps, we need thunder, we need lightning, we need rain, we need like all of those things to come in, because like that just felt like I just felt that so strongly. First time we heard the song, the bridge section really stood out to us because there was this sound of thunder from there, and we started unpacking this concept that started with this rain. So beautiful. Each song doesn't just become It's about so a cinematic. song, but it becomes about an entire world that comes from that language, from the people it's talking about, from the stories it's telling, from the lyrics that it's portraying. So that becomes much more than just a song. वो शक्लें, वो आइडियाज़, वो लोग, वो सब कुछ ऐसा था कि आई वॉज वाउड. Lucky Marwat tribe was a huge inspiration for this. Those people loved art and loved music. When you have to build that world,
So you have to build that authentically. आपके पास और कोई choice नहीं है. Yeah. लोग कहाँ से नहीं आए. You know, You we've want to had show something castings people real, have come it has to all the be- way up from north. It has to be natural. It has to be It's quite authentic. amazing to see that we have so much diversity, even in places where we don't feel that we have diversity. बहुत खुशी है क्योंकि बहुत सारे इधर जितने भी पठान पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें मुख्तलिफ इलाके से मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलने वाले हैं. These are all always local hear people. stories कि वो इतने This is one thing which I hospitable like हैं, about इतने it as मतलब well. प्यार से There वो are पेश no आते हैं stage आपके साथ. artists. हर कले जो है वो तो खैर हमारा एक स्लोगन कह लो या मैनिफेस्टो कह लो पश्तूनों का है कि मेहमान होते ही बेसिकली ख़ास है, वो अल्लाह की रहमत है. बेशक मैं नसीब। गरीब हूँ या मेरा हुजरा छोटा है आपके रहने के, लेकिन मेरा दिल बड़ा है. मैं आपको वेलकम कहता हूँ, आप कभी भी आएँ. Sure. लाइट राइट. Man is here. The star is here. Yes, sir. कैसा है जानी? I expected you guys to go above and beyond because that's just how Pakistanis do. Yeah, it's true. Everything is like from All in. original. You know, like जहाँ से हम belong करते हैं जिस word से वही सीन है. The fact that it happened so quickly and the lighting. Zabardast. and our DP. Amazing. Voice कैसा लग रहा है? Great, man. Amir is a wizard. This is Amir's world and we're living in it. 3, 2, and My favorites. How can Bilal. we make sure that these dancers look beautiful? The dance is nice, just always make sure that the line is perfect. that love and the art that we create here in Pakistan is so huge. It has is. potential to take over. Yep. That's why we're here. Until you tell them that you are a star, they will hide their magic. So he's like distracted, right? So we're not working with movements only, it's also choreographing their feelings. We want everyone to feel that feeling when you are part of creating something. Yes. Yeah. Sometimes we will work tight with the directors on the angle of the camera movements. They're talking about their food. Nasir is foodie. They're talking about their food is not so much spiced, but it's so tasty. Wow. Like they How do you taste? also they stuff it with they stuff rice it with rice. and keep it under. Let's go eat. इस तरह से एक अनार जो होता है वो बाहर से बहुत सख्त होता है, बहुत नॉर्मल लुकिंग होता है, लेकिन जब आप उसको खोलते हैं so it's almost like jewels inside it. बेशक बाहर से हमें एक हार्ड शेल नज़र आता है as outsiders, but अंदर कितनी खूबसूरती है. And generally the shape of this space is like an अनार जो ऊपर से खुला हुआ है. This is a place where the community gets together in times of sorrow, in times of happiness, in times of strife. With this concept, we're also establishing an arid, dry landscape on the outside. Under we have this little oasis. They have these traditions and nuances about their culture जो कि most people like we didn't know about that. जब बारिश नहीं हो रही थी बहुत देर से, सो जो बच्चे होते हैं उनको घर में कोयला जो होता है या जो आपकी तवे की जो कालक होती है वो बना के वो मुंह पे लगाते हैं बच्चे, और फिर वो घर से घर जाते हैं और जाके कहते हैं कि हम दुआ करेंगे बारिश हो. और वहाँ पे हमें कोई गंदम दे रहा है, कोई हमें चने के दाने दे रहा है. That's so sweet. तो हम सारे मिक्स लाते So हैं और उसको हम touching. उबालते हैं, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में गुंगड़ा ही बोलते हैं, और वो आप सारे बच्चे खाते हैं शाम के वक्त. फिर हम दुआ करते हैं बारिश के लिए. जो वो हाथ का काम करते हैं, मुझे जो नज़र आया वो ज़्यादातर तिल्ला था या डोरी का काम था. They kind of like move it in a way which is very unique. डांसर वाले ना सब इधर आए. मेरे लिए जो चैलेंज था वो ये था that Hashim's palette of the set was very earthy tones. And Pakhtun clothes are like bright colors. जो औरतों के frocks के prints होते हैं, shocking pink, green. So then you look for the prints, you look for the colors, you look for the material that's closest to theirs, but in a totally different extreme of colors. Brown, beige, moss green, very, very dull colors.
this guy dance. So the people in dance sequence, we have like a talent deck that Shafia makes, and it makes it very easy for us. So we just look up the name and the sequence, and we just stitch it with it so that it's easier, because there's so many people and we don't want it to get confusing. My whole idea was कि जब हम सेट पे जाएं आपको लगता है कि आप किसी और दुनिया में पहुंच गए हैं. So every little element, clothing, hair, makeup, sets, they all knit the story together. My favorite part. Sleeves. It's not a cheap big sleeves. I wanted her to feel good and make her feel happy. That feeling transcends into their expression. When an artist is happy, you truly feel that you've done something that is worth all the effort. Yeah. मुझे लिटरली ऐसा लग रहा था जैसे मेरा गांव है, सही है, बाहर बच्चे खेल रहे हैं, मेरी इमेजिनेशन वो जैसे ही मैं परफॉर्म कर रहा था उसका हिस्सा बिल्कुल बन गया था. This is exactly what it feels like when you are removed from culture. You don't have something to hold on to, so you have to hold on to these little knickknacks like crystals or potions, or your mom when she's trying to take off Nazar from you and she's doing this thing like around you and burning red chili flakes. Red chili flakes. I resonated and it made me feel like I was at home. So it was so easy for me to like feel comfortable and perform at my fullest capacity. Making it rain during a Coke Studio performance, that was something a bit out there. I'm glad that we finally got to do it. How do you make it rain without all the wires and all the live equipment and everything getting washed? एक म्यूजिक वीडियो में जो कि लाइव बज रहा है उसमें ये भी हो रहा है. For me this was unbelievable. It's supposed to look magical and mystical at the same time, and almost otherworldly and slightly foreboding, and slowly with rain you cleanse it and you see, no, this is us as well. Excellent! Very good! What the world thinks about us because of what the world sees about us is not exactly who we are. हमारा आर्ट एक्सप्रेस करता है कि हम पीपल ऑफ लव. बट जब वो हम फील करेगा सिर्फ हमारी वार्मथ को, तो फिर उसे रहा नहीं जाएगा. हमने बस वही कोशिश की जो आपने देखा नहीं है. जो आर्काइव था, जो फाइलें पीछे डस्ट में के अंदर पड़ी हुई थी, हमने वो केसेस बाहर निकाल दिए कि ये भी हम हैं. मैं कहता हूँ ये दिन ख़त्म ही ना हो, लिटरली, क्योंकि ये बहुत बड़ा दिन है मेरे लिए, बहुत बड़ा दिन. I always used to tell my mom that I wanted to be on Coke Studio. So I'm really grateful that I'm here in a moment where they want to welcome even people from the diaspora and remind you, like, even if you move all the way to Los Angeles, you're still Pakistani. Yeah. Welcome home, almost like that. That's what it feels like. Your roots are always there. Doesn't matter where you move, how far you are. You always want to go home. Harkali to everybody. You want to go home, always. That's the one place where everybody end up in the end. Yeah, so once again, very beautiful, and also how interesting it was to know about this culture and about the places. Like I said in my last video as well, when I was reacting to Babaroon La, that these places are very close to India. I mean, at the border of India and Pakistan, at the borders of Punjab and Rajasthan. And being an Indian and spending most of my time in India, I never knew about this. And for last 2 decades, I have been living in Europe, and I have made so many friends. I have met so many new people. In fact, one of my good friends is from Pakistan. One of other good friend of mine is from Peshawar. So now I can relate to this.
so much about their talking style, especially when the artists were talking. I could I could relate to the dialogues, uh, which I used to hear in Stockholm as well with some of the friends which I have from the other part of the world. So yeah, you never know when you can face something new or learn something new. This journey was really special because I learned so much about their culture, and also a little bit that they didn't have this right recognitions or the right identity in this world. People don't know about them. That's very strange as well. And there are a lot of places in this entire world where the people don't know anything about. Yeah, I think I'm gonna plan my trip to Pakistan and visit this all these places which I've been seeing now in these videos, because they are so beautiful and they are so uh, rich with their tradition and culture, and it's really beautiful. So yeah, this was really good journey as well. Again, once more. So thank you guys for watching. I hope you liked it, and if you liked it, you know what to do. Share, like, and comment. And I'll see you soon in my next video. Until then, take care, goodbye, and be safe.